सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. स्वागत है आपका द प्रिंट में और प्रिंट के खास करके पॉलिटिकल अड्डा के इस कार्यक्रम में। हमारा आज का सवाल है कि सरकार सेंसस को क्यों डिले कर रही, या फिर इसको दूसरे ढंग से कहें कि सरकार की हेजिटेंसी क्या है सेंसस को डिले करने में। क्योंकि 10 साल के बाद होने वाले सेंसस 2021 में होना था, लेकिन कोविड का बहाना लेकर एक तरह से लगातार सेंसस को डिले किया जा रहा है। अभी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से राज्यों को चिट्ठी भेजी गई है, जो लेटर भेजा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो सीमाओं को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उसको फ्रीज करने का जो टाइम है वो जून तक बढ़ा दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि जून के बाद 3 महीने का टाइम और लगेगा अगर सरकार सचमुच सेंसस शुरू कराना चाहती है 2023 में। लेकिन चूंकि उस समय राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चुनाव में लगी होगी, तो इसलिए वो और टलेगा और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेंसस के शुरू होने की जो संभावना है बिल्कुल एक तरह से छीन है। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं, और खास करके इस मौके पर हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ हैं। डॉक्टर प्रणव सेन, नोटेड प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, इसके बाद स्टैटिस्टिकल जो कमीशन थे उसके चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे यूपीए सरकार के दौरान में स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री में। तो ढेर सारे प्रोफाइल में, इतना सारा प्रोफाइल है कि मुझे पढ़ने में 15 मिनट का लग जाएगा टाइम। और साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर, आई जस्ट वांट टू नो कि इसका जो पॉलिटिकल रीजन है डिले का, उस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी भी कंट्री का सेंसस डिले होता है तो उसके लार्जर इम्प्लीकेशन क्या हैं, क्योंकि सरकार जो भी वेलफेयर के मैकेनिज्म के जो प्रोग्राम चलाती हैं उसके लिए डेटा जरूरी है। डेटा ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो इसके लार्जर इम्प्लीकेशन क्या समझ में आते हैं आपको? व्हाट आर द लार्जर इम्प्लीकेशन? देखिए, ऐसा है कि अगर सेंसस ना हो तो हमें ये पता नहीं कि हमारे देशवासी किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किन स्टेट्स में रहते हैं। तो आपके जो सेंट्रल सरकारी प्रोग्राम्स जो हैं उनमें कैसे पैसे एलोकेट किया जाए, उसमें बहुत गंभीर आंच पड़ती है। ताकि कुछ जगह में हो सकता है कि पैसे कम जा रहे हैं, दूसरे जगह में ज्यादा, और एक सामंजस्य का एक प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। उसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि सेंसस सिर्फ हेड काउंट नहीं है, सेंसस में और बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब उनसे भी पता चलता है कि आप सोच लीजिए, ये लोगों के पास घर नहीं है तो आवास योजना, आप आवास योजना कहाँ करवाओगे, किनके पास घर है, किनके पास नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जो सर्वेज होती हैं, जो डिटेल्ड सर्वेज होती है, जिसके आधार पे सिर्फ भारत सरकार नहीं, आपके राज्य सरकार भी अपने प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, उस डेटा वो पूरा डेटा आप सैंपल कहाँ से निकालते हो वो सेंसस के ऊपर चलता है। आज के दिन हालत ये है कि सेंसस 2011-12 का है। अब आपके 11 साल तो गुजर गए। 11 साल में हमारे देश में काफी तब्दीली हुई है, पर हमें ये नहीं मालूम कि क्या हुआ है। वो सेंसस ही बता सकती है, और सेंसस के बाद जो सर्वेज होंगी वो हमें पूरा डिटेल देगा। तो अगर ये सब ना हो तो ये जो आपके जो सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं वो आप कैसे डिजाइन करोगे, वो कहाँ अमल करोगे, ये सारा बिल्कुल पॉलिटिकल प्ले पे चला जाता है। इसमें कोई आंकड़ों का महत्व नहीं रहता है, और इससे मेरे ख्याल से काफी नुकसान हो सकता है देश को। So why do you think the government is delaying it? Because the opposition parties
think when we talk to them that the government does not want this data out before 2024 Lok Sabha election. Do you see any merit in these arguments? Well, no. The real issue is that the census is a complex operation. So if you look at the 2011-12 census, the first step in any census is what's called the house listing operation, where every residential dwelling, every dwelling, in fact, not residential, is visited and are demarcated in detailed maps, which forms the basis by which the Census Commissioner's Office carves up the country into what are called enumeration blocks. And then the census begins with every enumerator being given a certain number of blocks to cover. This exercise takes at least 4 months. And last time in 11-12, it involved 2.5 lakh people. So these have to be 2.5 lakh public employees. They're mostly teachers. The census operation itself has to be completed within 10 days. Right? Now, in order to cover every dwelling, every residence, and every person, requires a much larger number of people. That last time it was 2.5 million, yani 25 lakhs. Okay? To just get this kind of people and to train them, because they need to be trained very thoroughly in the process and the procedure. Otherwise, you could make serious mistakes, is not an easy job. And if the government feels that they cannot be spared for whatever reason, then this operation cannot take place. But the government has not actually given us any reason. Earlier, they were talking about COVID, but now in the latest circular, no reason has been cited as such. You see, this is the thing. Insofar as the house listing operation is concerned, which is the first step, it could have been done during COVID as well. For the very simple reason, there is no person-to-person contact. Okay? This is just one person going around the city or the village or the town and simply noting down how many houses are there on a map. There is no person-to-person contact. That could have been done. I don't think there was a problem. The census operation itself could have been done last year, because the census operation takes only 10 days. Right? The real question then would come on the training part of it. The training part of it means that you have to get 2.5. Now, at that time, it was 2.5 million people. You will probably need 3.2 million people now. And they have to be trained. So just getting that organized is an issue. But I don't see why it could not have been done last year. I think it could have. So if there is no further extension to this freeze till June, do you see enumeration exercise getting completed before May 2024 when the elections take place? Almost certainly not. Because what will happen is, even if we start today, the house listing will have to be done. Now, the house listing means first to train the house listing enumerators. So supposing we start today, let's say at the end of January, the process begins. It will take you at least a month to month and a half to train these people. Another 3 months for them to collect the data and then organize the data into maps. And then a little bit of time, that's not very much, very long, for the Census Commissioner's Office to demarcate the enumeration blocks. Right? So that would be completed, let's say, sometime around June or July, roughly. The problem is that training 3.5 million census enumerators would take you much longer.
Because you can't just take 3.5 million people out and put them into a room. I mean, this has to be staggered across the country. The trainers have to go there. So that process is fairly long and it's fairly detailed, because the census enumerator cannot make a mistake in the way that the census questionnaire is filled. They must understand it. So that process will take long. So I don't think that if we completed by the end of July, the house listing operation, I don't think we could begin the census till the beginning of 2004. So the question is, say, if the US could do it, Canada could do it, China could do it, why could we not? Well, for a couple of reasons. Firstly, of course, we are talking about a country of 1.4 billion people, right? So if you look at the US, they are 1/4 our size. In fact, less than 1/4 our size. So it's easier to do it there, number one. Number two, remember, in a lot of these countries, the census is done on a postal basis. In China too? No, not in China, but in the US it is. So the amount of workload is relatively less. The point is that in the Indian context, and this is not true of China, by the way, we have a problem, which is that a fairly large proportion of our adult population who will be responding to the questionnaire are illiterate. So they cannot read the questionnaire. The questionnaire has to be read out to them and explained to them. So the problems of conducting a census are substantial in a country like India. The point is, we've been doing it. We've been doing it for more than 100 years. So it's not as impossible. But in our case, number one, it takes time. Number two, the level of training has to be very, very good. But it's also a fact that after 2011, now you have another census that will give you a fair idea of how the government's policies and programs have made the impact on the ground, how the people's lives have changed. And after demonetization, after COVID, probably they would also have an impact on the results. I mean, what has happened on the ground fire? Oh, no, it will. The point is, you will get the data at a second point in time. That may or may not, in fact, most times it will not allow you to be able to ascribe the reasons for why these changes have happened. Okay, that requires more detailed data. That requires actually household interviews, which will come from the survey operation, not the census. But the point is, I can't do a meaningful survey unless I have the census data first available to me. सर, जो आर्गुमेंट ये है कि इसके लिए एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज और ढेर सारा एपरेटस इन्वॉल्व होता है। अगर हम 2020 से देखें, जब से कोविड शुरू हुआ, 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 14 स्टेट हैज गॉन टू असेंबली पोल, और अगर इस साल 2023 को भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर 10 स्टेट, यानी कि 24 स्टेट के इलेक्शन हो चुके हैं, होंगे इस साल के अंत तक, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है, ट्रेनिंग, ईवीएम को पहुंचाना, इसके अलावा कैंपेनिंग, पॉलिटिकल प्रोसेस। इसके बाद भी 24 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार डेटा से डरती है? सरकार की जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं, कुछ और हैं। उनको लगता है कि इट विल बी फर्स्ट सेंसस आफ्टर बीजेपी केम टू पावर। तो ढेर सारे डेटा आएंगे, और पिछले कुछ सालों में आपने ट्रेंड में देखा होगा, आपने भी कई बार कहा है कि अलग अलग सेंसस के अलावा भी ढेर सारे डेटा जो आते हैं, वो सब भी डिले हो रहे हैं, कई सारे एग्जैक्टली। नहीं, ये तो सही बात है। और पहली बात तो ये है कि 2001 का सेंसस भी बीजेपी सरकार रहते हुए हुआ था, तो ये बात नहीं है कि ये पहली बीजेपी सरकार होगी। पर वो बात आप छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से सेंसस किया जा सकता था। बहरहाल शायद 2021 में ना हो पाता, पर 2022 में तो जरूर हो सकता था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने इरादा ले लिया है कि सेंसस के साथ एनपीआर बनेगा,
तो उसमें उनको हिचक हो सकती है, क्योंकि आपको तो पता है ये एनपीआर के मुद्दे पे पहले क्या हो चुका है, और इस बार भी अगर वो एनपीआर करना चाहे और ये इलेक्शन के तुरंत पहले हो, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा इलेक्शनों में। तो हो सकता है कि उनके मन में ये एक चिंता है कि सेंसस के साथ एनपीआर करेंगे तो बेहतर है कि इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद ही करें। But they can do it separately also, sir, no? It's very expensive. It's much easier to club it with the census. These operations are extremely expensive. So, sir, what is it about politicians that they seem to be pretty wary of data? I mean, you had this consumption expenditure data in 2017-18, government rejected it. 2017-18, in fact, you had some leaked report about the PLFS. That was also rejected, though later on this exercise continued. So, what is this hesitation about having data-based evidence? Well, the thing is that I think the hesitation comes from actually making announcements about the achievements of the government in the absence of any data. So announcements are made first and then data comes later. And if the data then doesn't support the announcement, it involves the government backtracking, which is a serious loss of face. So, do you think, sir, other political party are making this point कि अगर सेंसस सरकार ने शुरू कर दिया, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, और जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है कि भाई आप इसमें ओबीसी की काउंटिंग भी कराओ, उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की जो बात यूपीए सरकार ने की थी, तो आप इसको ओबीसी सेंसस भी कराओ। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वो अगर आप नहीं कराओगे हम पदयात्रा करेंगे। कई सारी स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि इस पे होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और बीजेपी ने खुद, जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लास्ट टाइम एडमिट किया था कि अगला जो सेंसस होगा उसमें ओबीसी काउंटिंग भी होगी। 2010 जो सुषमा स्वराज, दैट टाइम शी वाज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी कि जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें कास्ट को इंक्लूड करना चाहिए। तो सरकार को ये डर लगता है कि अगर सेंसस का बवेला शुरू किया तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसको कास्ट के डायरेक्शन में मोड़ देंगी और फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और सरकार का जो सारा हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगी। देखिए, अभी सेंसस में हम कास्ट पूछते नहीं है, उस पे काम हो चुका है और जो डेटा आया था उससे हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इतने ज्यादा, क्योंकि हर इंसान अपना सब कास्ट बताता है, कास्ट नहीं बताता। तो अगर आप सेंसस देखिए उसमें सिर्फ एक ही सवाल है, आप एससी या एसटी हो या नहीं, खत्म। ये नहीं कि आप क्या एससी हो या क्या एसटी हो। तो मेरे हिसाब से आप अगर ओबीसी करना चाहें वो आप शामिल कर सकते हो, उसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं होने वाला। पर अगर आप पूछना चाहो कि भाई आप कौन से कैटेगरी के ओबीसी हो, उसमें मुसीबत होगी और वो करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। So, sir, yesterday Shankar was talking to the former Deputy Registrar General K. Narayan Unni. He was saying that the census from the census data, you can probably deduce the actual number of deaths during COVID. Is that possible? How can it be done? Yes, because you see, what we do have is a system which is called the sample registration system, which measures the rates, not the number of deaths, but the rate of death and birth on an annual basis. This system exists. So if you use the data on the last census data and you calculate what the deaths should have been in 2020, and then the census is giving you a different number, that would give you a measure of how many people died during the pandemic.
So yes, it is possible. एक व्यूअर का सवाल है सर कि अगर सेंसस होता है तो जो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां ये डिमांड कर रही हैं कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए, तो उसमें अपर कास्ट का जो सेंसस है, अपर कास्ट का जो नंबर है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आपको लगता है इट विल बी होल पेंडोरा बॉक्स कि अपर कास्ट कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी तो चलिए काउंटिंग होती ही है, तो इसलिए भी सरकार को लगता है कि इस पेंडोरा बॉक्स को छेड़ना नहीं चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आप अगर एक जेनेरिक कैटेगरी ओबीसी, क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन तो है ही है, और आपका जो रिजर्वेशन जब आपने रिजर्वेशन किया, और वो तो भी हो चुका है, इट्स अ फैक्ट, तो आपको तो आंकड़े चाहिए ना, कितने बेनिफिशियरीज हो सकते हैं उसका। इसीलिए एससी एसटी का हो रहा था पहले भी, तो ओबीसी एज अ कैटेगरी इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिटेल्ड कैटेगरी, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, वो नामुमकिन है। So, for a layman like me, if you could explain this, if through the census, how do we get a measurement of a government's performance? Not directly, you don't. What you do get from the census is the basis on which you can do detailed surveys. In the absence of a recent census, your survey data is very questionable because the survey then does not reflect the population. So the census is essential for being able to do high quality surveys. Okay, it's the mother data set. The census itself will not give you enough details to do what you are asking for. But when we talk about household amenities, their educational standard, literacy standard, that will show how successful the government's It program. will show it up to a point, but not in the same way as so that's why the surveys are done. It then allows you to link up. सर देयर इज अ क्वेश्चन, मेनी स्मॉल कंट्री, बहुत सारी ऐसी जो छोटे देश हैं, उन्होंने सेंसस को एक तरह से अबैंडन कर दिया है। डू यू थिंक या डू यू सी एनी सिंस्टर डिज़ाइन कि जैसे कि होम मिनिस्टर के 2-3 स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो अगला सेंसस होगा वो डिजिटल होगा। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का नाम भी बताया कि वो उसमें खुद से आप अपने डेटा को अपलोड कर दें। तो आपको लगता है कि जो कई सारी ऐसी कंट्री हैं वो ऑटोमेटिक वो एक डायनेमिक प्रोसेस होगा जिसके जरिए आप अपने डेथ्स एंड बर्थ को रिकॉर्ड कर सकते हैं? इंडिया में पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? और उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो छोटे जो देश हैं, लोग ज्यादा इधर उधर जाते नहीं है, छोटे हैं आफ्टर ऑल। हिंदुस्तान में सालाना, ये पुरानी एस्टिमेट है, अब शायद बढ़ भी गई हो, सालाना करीब 80 मिलियन लोग यहां से वहां जा रहे हैं। आप उसको कैसे ट्रैक करोगे? उनका आज का एड्रेस बहरहाल आपके पास होगा, पर वो कहां शिफ्ट कर गए, वहां क्या कर रहे हैं, उसको आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं। और ये हमारे डेमोक्रेसी में लोग यहां जहां मर्जी जा सकते हैं और जाते भी हैं। और 80 मिलियन सालाना कम आंकड़ा नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से वो देश जो कर रहे हैं कि सेंसस करने की जरूरत ही क्या है, आप बर्थ्स एंड डेथ्स और इमिग्रेशन मेजर कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपका पॉपुलेशन क्या है। हाँ, वो हमारे यहां नामुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन सब देशों में जो आपके बेसिक हाउस होल्ड अम्यूनिटीज हैं वो ऑलरेडी सबको उपलब्ध है। हमारे यहां बहुत सारे इलाके हैं कि जहां ये नहीं है, तो पहले उन इलाकों को तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो वो सेंसस के बगैर आप कैसे करोगे? Some opposition leaders we are talking to, their viewpoint, I would say, or pure conjecture, that when you have this decennial data that will give you the rate of growth of, say, different religious groups, that may not fit into the ruling party's narrative. That is quite possible. That is quite possible because an important part of the narrative has been that the Muslim population is growing faster than the general population. And
It's quite possible the census might say, no, sorry, that's not true. Yes. So, which means that particular narrative then goes out of the window. पर एक सवाल है सर कि जो अगर इस बीजेपी सरकार को देखें तो उनकी जो ज़्यादातर जो पॉलिसी है वो एक तरह से वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी जो होती है उसके लिए है। आप अगर सेंसस की डेटा को नहीं करा रहे हैं, अगर 4 साल डिले हो गया और सेंसस के डेटा आते-आते तक भी अगर आप 2024 में भी शुरू करें तो 2027 तक आपके डेटा आएँगे सही है। या उससे पहले आ सकते हैं। तो वैसी देखिए, हैंडहेल्ड से करें तो भी मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल लगेंगे डेटा प्रोसेस करने में। एग्जैक्टली तो वैसी स्थिति में जैसे कि आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आज की तारीख में आप 80 करोड़ लोगों को फूड प्रोवाइड करते हो, लेकिन पिछले डेटा को अगर देखें 2020 का तो 10 करोड़ अभी भी गैप है। तो ऐसे एक बड़ी जो आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, उसको आप वेलफेयर मैकेनिज्म से, प्रोग्राम से वंचित कर रहे हैं। तो ये तो सरकार के खिलाफ भी जा रहा है। नहीं, ये सही बात है। तो आप अगर देखें, आज जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 2011 सेंसस के आधार पे नहीं है, वो उसके बाद जो एसईसीसी हुआ था 2012 में उसके आधार पे है। और वो एसईसीसी का जो क्वेश्चन है वो डिटेल्ड क्वेश्चन है, पर उसमें ये जल्दबाजी नहीं है कि आपको 10 दिन के अंदर ही खत्म करना है, वो आप पूरा साल ले सकते हैं उसको खत्म करने में। पर वैसा एक एसईसीसी करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये जो लिस्ट जो है आपके और आपका जो ये स्पेशल राशन कार्ड जो इशू होता है, आप वो लिस्ट में कोई तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है। पर पहले सेंसस फिर एसईसीसी टाइप सेंसस, वो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप नहीं। Sir, as a statistician, if you could help us understand, whenever you have data about unemployment, poverty, and you have different voices coming, different data sets are thrown at you. So only the day before, Haryana Chief Minister said Haryana Chief Minister was countering the CMIE report, which showed that it's the unemployment is the highest rate is the highest in Haryana, and he said it's 6%, not 36% as the CMIE has projected, because CMIE has a smaller sample size. What are we as citizens supposed to do? I mean, how do we read the actual data? What's happening? See, this is at the heart of the problem. At the end of the day, until quite recently, this was not a problem we had. The government statistical sources were treated as the only authentic data in the country. Right? So whenever the Ministry of Statistics put out data, this was accepted by people without questioning. I'm afraid that kind of trust and faith has become much weaker today. Now, alternative data sources like CMIE and so on, the private data sources, there is nothing intrinsically wrong with their data, but to understand the extent to which they are actually correct would require people from outside those organizations to examine in detail what the process of data collection was. How was the sample selected? How were the questionnaires administered? What happened if there was no response from some interviewee? All of this has to be understood to be able to get a feel for the quality of that data. Unfortunately, a lot of the private data generators don't provide these details so that people can take a call on it. Unfortunately, even if they do provide the detail, the average person on the street won't be able to judge. It will have to be done by experts. And who wants to hear experts talking about so-and-so's quality of data is not good? A politician can do the same thing, right? He can just go out and say, no, CMI data is not good. End of story. Nobody is asking the Haryana Chief Minister, on what basis have you made this comment? So, sir, what can be done? Because I have been reading your articles and I've been hearing you where you have been expressing concern about this reliability of data and how kind of declining that reliability is going now gradually. What can be done to restore that? It's a slow process. It is very difficult to build up the reliability and credibility of a data system.
it is very easy to destroy. Very easy to destroy. Because you have to restore the faith and trust of every Indian, which is not easy. And who or what is responsible for this lack of reliability today? Well, you see, that's difficult to say. One of the things that was done was to set up the National Statistical Commission, which would be an independent arbiter of the quality of data. Unfortunately, the National Statistical Commission has not been active at all. I mean, it's a very sad commentary. But if you ask the average man on the street whether they've heard of the National Statistical Commission, I guarantee you that 99.9% will say they've never even heard of it. But it's institutions of that kind which are like the conscience of the data system, which are important. And, the National Statistical Commission, I think they've just appointed a new chairman, but I don't know whether the commission has the full number. It is supposed to have 5 members. I'm not sure it does. At least I have not heard about it. So, in a sense, the institutions which operate our statistical system have become a little eroded. And is it because our political executive has started interfering in it? No, I think one of the reasons for it is that, one of the main, sources of support for the statistical system in India was the planning mechanism. Planning required detailed data and it required accurate data. So the Planning Commission, which was a powerful body, was a huge supporter of the statistical system. Once the Planning Commission went away, that kind of an internal support to the statistical system has vanished. It doesn't exist anymore. So the statistical system is left to itself. So coming back to our original question before you wind up, what do you see is the reason for putting census on hold, administrative or political? I don't think it is administrative anymore. I think it is now political. It was administrative. I think 2020 would have been very difficult, but I see no reason why the house listing operation couldn't have been done in 2021 and the census done in 2022. थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़ने के लिए और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें एनलाइटन किया, व्यूअर्स को बताया कि ये पूरा प्रोसेस डिले होने से इसके क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, वो एंड तक अंतिम आदमी तक पहुंचने में उसमें दिक्कत होती है और सरकार को सेंसस टाइम पे कराना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ सेंसस का नहीं है, इसके अलावा भी ढेर सारी जो डेटाएं हैं और डेटा से जुड़े हुए इस तरह की काउंटिंग होती हैं, वो भी पिछले कई सालों से डिले हैं, कुछ तो 4-5 साल डिले चल रही हैं। लेकिन आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सवाल, अपने जवाब, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू।